Hello everyone, I am Dr. Devaram, Assistant Professor, Department of Geology, Government Dungur College, Bikaner. Today we are going to discuss an important topic of physical geology, that is mass wasting, सामूहिक क्षय. Mass wasting refers to the downslope movement of rock and soil under the influence of gravity. सामूहिक क्षय एक स्लोप के अलोंग रॉक और सॉइल का ग्रेविटी के प्रभाव से नीचे आने को सामूहिक क्षय बोलते हैं. This is a result of Earth's surface not being flat but instead consisting of slopes. यह फ्लैट एरिया में ना होकर के जो स्लोप वाले एरिया होते हैं वहां पर ज्यादातर होता है. Mass wasting is a natural process and is considered a natural hazard. सामूहिक क्षय एक प्राकृतिक प्रक्रम है और इसको एक प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है. This process become natural disaster when it leads to loss of life and property. और जब जिंदगियां लीन लेता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी का विनाश होता है तो यह एक प्राकृतिक आपदा बन जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ मास वास्टिंग, सामूहिक क्षय का वर्गीकरण. Wasting based on moisture and speed. The illustration classify each example of mass wasting such as controlled and triggered by moisture, that is water, and speed, that is rate. The saturation of water destroys the cohesion of rock particles, causing them to lose. So in this diagram or the photograph, we can say that the dry part consists the rock fall and the rock creep, and under the moisture landslide and slump is takes place, and in the wet, or we can say the mud flow, earth flow, and solifluction takes place. So rock fall, landslide, and mud flows are the fast process, and earth flow is the speedy, and solifluction and creeps are very slow process. In addition, water also adds weight to a mass of rock particles, causing them to slide or flow downslope due to the gravity. जब पानी रॉक मास में मिल जाता है तो उसको स्लाइड करने में और फ्लो डाउन स्लोप करने में भी मदद करता है. The speed of rock particles moving downward is slow results when air becomes trapped and compressed beneath the falling mass of debris, allowing it to move as a buoyant, flexible sheet across the surface. Based on the type of motion, mass wasting could be generally classified as fall, slide, or a flow. Fall is the free fall movement of detached individual piece of rock, and slide occurs whenever rock material remain fairly coherent and move along the well-defined surface. And flow happens when rock debris are saturated with water and move downslope as a viscous fluid. So it is generally classified into three types, that is fall, slide, and flow. So fall is detached movement with the piece of rock. Slide
is the fairly coherent and move along well-defined surface. And flow happens when rock material are saturated with water and move down slope as a viscous fluids. So the example of fall, slide and flow includes the fall include the rock fall, slides include the landslide and slump, and flow includes the mud flow, earth flow, solifluction and creep. So first of all, rock fall. Rock falls the abrupt movement and free fall of loosened block of the rock. So we can see here in this photograph, that is all the blocks of the solid rock are freely fall abruptly on the roadside. Landslide is the movement of rock, debris or earth down a slope. एक स्लोप के along अर्थ के जो मलबा होता है वो रोड के अलोंग या स्लोप के अलोंग इकट्ठा हो जाता है, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं. A slump is a form of mass wasting that occurs when a coherent mass of loosely consolidated material or rock layers moves a short distance down a slope. Movement is characterized by sliding along a concave, upward or planar surface. So, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का सामूहिक क्षय है जिसमें लूज कंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं, रॉक प्लेट्स होती हैं, वो थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस या छोटी जगह पे डाउन स्लोप में आ जाते हैं और एक कॉनकेव अपवर्ड और शेप में इकट्ठा हो जाते हैं एक प्लेनर सरफेस के ऊपर. नाउ अर्थ फ्लो. एन अर्थ फ्लो is a downslope viscous flow of fine grained material that have been saturated with water and moves under the pull of gravity. जब रॉक मटेरियल जो फाइन ग्रेन हो उसके साथ में पानी मिल जाता है तो वो सैचुरेटेड मटेरियल ग्रेविटी के साथ में डाउन हिल स्लोली फ्लो करता है. That is called as earth flow. It is an intermediate type of mass wasting that is between downhill creep and mud flow. Mud flow और creep के intermediate टाइप का ये मास वास्टिंग है. फ्लो या लहर. A flow or the mud flow is a form of mass wasting involving very rapid to extremely rapid surging flow of debris that has become partially or full liquefied by the addition of significant amount of water to the source material. इसमें जब मड में बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में पानी मिल जाता है तो बहुत रैपिड से भी अत्यधिक रैपिड एक फ्लो होता है डेब्रिज का जो कि मड फ्लो कहलाता है. Solifluction, the gradual movement of wet soil or other material down a slope, especially when frozen subsoil act as a barrier to the percolation of water. सिंपल भाषा में कहें तो गीली मिट्टी का धीरे धीरे एक डाउन स्लोप के अलोंग मूवमेंट होना, जब कि नीचे का जो सरफेस होता है वो वाटर को परकोलेट नहीं करता है यानी इम्पीरियस लेयर होती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉलिफ्लक्शन. Creep. Creep is a very slow mass movement that goes on for years or even centuries. बहुत ही मंद गति का सामूहिक क्षय होता है जिसमें कई वर्षों से सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं.
वी कांट सी क्रीप हैपनिंग, हम इस क्रीप को देख नहीं सकते या पता नहीं चलता, बट लर्निंग फैंसीज एंड पोल्स एंड ब्रोकन रिटेन वॉल्स शो वेयर इट हैज टेकन। और उन जगहों पर तारबंदी में, कई सारे खंभों में या कई सारी दीवारों में इस प्रकार की हैपनिंग देख सकते हैं। Some hills are covered with long narrow steps called terraces, और terraces are built by soil cliff। कई पर्वतों पे इस तरह सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और वो जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्हीं क्रीप का रिजल्ट्स होते हैं। So this is the mass movement. Thank you.